अस्सलाम वालेकुम। वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ एग्जम्पशंस। किस किस इनकम पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स एग्जम्पशंस। वी हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर। पेंशन पे टैक्स एग्जम्पशन थी और डिफरेंट चीज़ें थी। नाउ वील टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट मीन्स द इंटरेस्ट इनकम दैट यू गेट markup or interest from saving accounts in the bank or national saving schemes. फॉरेन प्रॉफिट ऑन डेट पे पाकिस्तान में टैक्स है। इफ सिंपल ले मैन और सिंपल इंडिविजुअल हैव सम प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम सम सेविंग अकाउंट इन पाकिस्तान फ्रॉम मिजान बैंक और HBL और नेशनल सेविंग स्कीम्स, they have to pay tax 15% or 20% for the filer. But if there is a foreign currency account by a non-resident, there are two types of accounts in Pakistan. I have seen such kind of ads in the newspaper. If you deposit your rupees, for example 1 crore rupee, you deposit it in the bank for 1 year, you will get around, in today's market, you will get around 10% markup return या profit on debt on 1 crore. 1 crore का 10% means 10 lakh annually. That is on rupee. लेकिन अगर आपके पास डॉलर है, that is a foreign currency account, if you keep your dollars in that foreign currency account, उस पर भी प्रॉफिट आता है, बट दैट इज नॉट 10%, इट वुड बी अराउंड 4% अभी आजकल के हालात में। दैट इज बिलो देन द रुपी अकाउंट, क्योंकि रुपी डी वैल्यू भी हो सकता है ना। डॉलर अकाउंट में जितने डॉलर रखवाएंगे उतने ही डॉलर मिलेंगे आप, तो वहाँ से डी वैल्यूएशन वाला रिस्क कवर हो जाता है। लेकिन आम इंडिविजुअल रेजिडेंट्स को टैक्स है। लेकिन इफ देर इज अ फॉरेन करेंसी अकाउंट बाय अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल or non-resident AOP or a company, then there is no tax on profit on debt if that is in foreign currency account by a non-resident. Residents के ऊपर last year it was 15% for the filer and 13% for non-filer. This year they have increased it to 20% and 40% for the non-filer. REIT, second is REIT, Real Estate Investment Trust. तो REITs की जो इनकम है that is also tax exempt, provided कि वो जितनी इनकम है उसका 90% at least that is divided among the shareholders or the unit holders. तमाम unit holders को वो divide होगा, then that is tax exempt. Similarly, if there is an educational institution, there is a college or a university and that is providing educational services, तो उसकी इनकम पे भी टैक्स नहीं है, but there is a condition. They should announce that is not for profit institute. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है लेकिन it is like being, you can say being came into being for profit making, फिर उस पर टैक्स है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और साथ उसका पर्पज प्रॉफिट नहीं है, देन उसकी ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी टैक्स नहीं है। Similarly, there is a university in different cities of Pakistan that is name is called ComSets. तो भी कैटेगोरिकली मेंशन है ऑर्डिनेंस में कि ComSets की इनकम के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, दैट इज आल्सो टैक्स एग्जम्प्ट। गवादर, गवादर इकोनॉमिक जोन है, उसकी इनकम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, फॉर एग्जांपल गवादर में रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, बिल्डिंग्स, तो दोज कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर वर्किंग इन गवादर ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, उन कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स की इनकम पे भी टैक्स नहीं है। गवादर में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनकी इनकम पे भी देयर इज नो टैक्स, देयर इज एन एग्जम्पशन ऑन दैट इनकम, उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। देयर इज नो टैक्स ऑन गवादर, बट दिस इज नॉट द केस कि जी देयर इज नो टैक्स ऑन गवादर फॉर 200 years. नो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हैज मेंशन्ड द टाइम पीरियड। गवादर पोर्ट ऑपरेशंस हैं, गवादर फ्री इकोनॉमिक जोन है, एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर वर्किंग इन गवादर, दे हैव गॉट एग्जम्पशन फॉर 23 years, एंड दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2016, इट वाज आल्सो मेंशन्ड। तो 2016 से 23 years तक देयर वुड बी नो टैक्स ऑन देयर इनकम, टैक्स एग्जम्पशन फॉर गवादर। समटाइम्स गवर्नमेंट्स अनाउंस सम टैक्स हॉलीडेज to establish new economic zones. For example, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, सैयावाला इंडस्ट्रियल स्टेट और सब इंडस्ट्रियल स्टेट इन बलूचिस्तान और KP के, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज लगें, फैक्ट्रीज लगें, एस्टेब्लिश हो,
So they give tax holidays for 20 years or 15 years. This is also one of the policy of the government to establish those industrial areas. इसी तरह से कंपनी चाइना ओवरसीज कंपनी दैट इज ऑल्सो वर्किंग इन गवादर, उसको भी उन्होंने कहा है कि इसकी भी जो इनकम होगी, डिविडेंड होगा, उसके 23 ईयर्स तक देर इज नो टैक्स ऑन इट्स इनकम फॉर 23 ईयर्स, 23 साल तक. Similarly, religious and charitable organization, we have talked about it in the previous lectures as well, कि religious और charitable इदारे जैसे अल खिदमत फाउंडेशन, शौकत खानम, even some religious organizations, जमातुद दावा and some other many other organizations, उनकी भी जो भी इनकम होगी that is also tax exempt, but they need to get approval from the FBR first. उन्हें ये साबित करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स में, डॉक्यूमेंट्स में कि they are offering only religious and charitable services. So then their income would be exempt from the tax. Immovable property. Immovable property means it can be a constructed house or it can be a plot. इस पे भी tax exemption है, not for everyone. If somebody has purchased a house at a price of 20 million, अगर किसी ने 2 करोड़ का एक घर खरीदा है, now he sold it at around you can say 30 million, 3 crore, so there is a gain of 1 crore. So there would be tax on that 1 crore. This is called capital gain on sale of immovable property, or you can say profit on the sale of immovable property. तो जो 1 करोड़ का गेन है इसके ऊपर टैक्स लगेगा. लेकिन एग्जम्पशन किसको है? एग्जम्पशन उसको है if the person is the original allotee, यानी फर्स्ट टाइम वो प्लॉट या घर उसको अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से, and he kept his family there, मतलब इसकी अपनी पोजेशन में था, it was not rented out. उसने ये भी साबित करना है कि he was living himself in that house. तो फिर वो जब पहली दफा वो घर बेचेगा तो there would be no tax on the sale of immovable property if he is living himself, acquired by himself. ठीक हो गया. तो उस केस में एग्जम्पशन होगी, लेकिन उसमें भी उन्होंने साइज दिया हुआ है कि 500 स्क्वायर यार्ड का हाउस हो सकता है और 4000 स्क्वायर यार्ड तक फ्लैट हो सकता है. इससे ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो फिर टैक्स लगेगा. तो दे हैव आल्सो गिवन द साइज विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सेकेंडली, इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी इन वो प्रॉपर्टी ओन्ड बाय डिपेंडेंट्स ऑफ शहदा, द मार्टर्स, द शहीद ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, उनकी फैमिली या उनके डिपेंडेंट्स के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो उसको सेल करते हैं तो उनके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, उन्हें एग्जम्पशन होगी. उनके ऊपर इनकम टैक्स जो भी बनता है उसके ऊपर, गेन के ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा. So that is why this sale of immovable property is exempt from tax only in few cases. Otherwise सबके ऊपर ये टैक्स है. लेकिन मैंने कहा जैसे शोधा के ऊपर, and if one is the original allotee, तो उसके ऊपर वो टैक्स नहीं है. Similarly, if somebody dies during the service, अगर कोई पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, व्हेन आई से पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज इट मीन्स एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, ऑल फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज. सिमिलरली if somebody is in the service of provincial government, government of Punjab, government of Sindh, KPK, and if somebody is in फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, अगर वो ड्यूरिंग सर्विस किसी की वफात हो जाती है तो उसका भी जो घर या प्रॉपर्टी अगर कोई सेल होगी तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होगा. दैट वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन एंटरप्राइज, इनकम बाय वुमेन एंटरप्राइज. वुमेन एंटरप्राइज मीन्स इफ देयर इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप or AOP or company that is owned by a woman, and not the majority, 100% ownership is by the woman. It can be 1 woman, 2 women, लेकिन 100% ownership women के पास होगी. If the ownership is 100% by a woman, तो फिर उनकी tax liability, not the taxable income, tax liability would reduce by 25%. मतलब टैक्स अगर बनता है 1 लाख तो they have to pay only 75,000 rupees. 25% of the tax liability would reduced for women enterprises. This is by the government to facilitate, to improve या to encourage women for business activity. तो women enterprise में भी 25% की exemption होगी in the taxation. Cinema.
to promote this industry, because Pakistani cinema industry may be not going very well in the last few years. The government has introduced few years ago कि जो income cinema के operation से आएगी, somebody's company is getting income from cinema operations, तो उसका उन्होंने tax exemption दी है up to 5 years तक. Up to 5 years cinema की भी, if somebody is in the production of feature films, if some producer is producing feature films in Pakistan, तो उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए उसकी इनकम पे भी 5 साल तक कोई टैक्स नहीं है. So that is also tax exempt for up to 5 years. 2020 तक, इस केस में है 2027 तक, and this is for 2030 तक. 2027 तक if there is a production house and they are producing films, feature films, तो उनकी इनकम पे भी माफ़ी है. There is no tax on the income of feature films till 2027. This is the computer software. If you are providing computer software services to any company in Pakistan, your income is not tax exempt. Listen again, if you are providing computer software services to some company within Pakistan, तो फिर आपकी इनकम पे exemption नहीं है. यहाँ पे the actual word is here is export. Export of computer software. हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो दे आर वर्किंग इन पाकिस्तान, देयर मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंटेज इज आउटसाइड पाकिस्तान, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज. तो व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड आईटी सर्विसेज, इसमें कॉल सेंटर्स भी आ जाएंगे, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, दे हैव गिवन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज व्हिच आर अंडर दिस कैटेगरी. दैट कैन बी कॉल सेंटर्स, networking, for example, software development, software maintenance, system integration, web design, web development, web hosting, network design, all and different other accounting services, call centers, graphic design, remote monitoring, medical transcription, etc. Those come in the export of computer software service, IT services. तो उसकी इनकम पे भी टैक्स नहीं था till this year. अभी रिसेंट बजट में दे हैव इंट्रोड्यूस सम टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेरी फर्स्ट टाइम. तो आईटी वालों ने काफ़ी शोर मचाया इस साल कि जो आईटी की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रही थी, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट. दिस वाज द क्रिटिसिज्म. लेकिन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सम लिटिल बिट टैक्सेशन ऑन दिस, लेकिन अभी तक टैक्स एग्जम्पशन थी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. लेकिन उसकी एक कंडीशन में देखो, व्हेनेवर गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट give some exemptions or some relaxation, they have also some, you can say, limitations. उसकी कुछ conditions भी होती हैं. तो इसकी ये condition है कि you are exporting computer software, तो डॉलर भी पाकिस्तान आने चाहिए through proper banking channel. ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने किसी कुछ सेल्स एक्सपोर्ट की सॉफ्टवेयर और उस पैसों से बाहर ही कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है. मतलब यू आर exporting computer software and you have purchased some apartment in London by those amount, तो फिर यहाँ पे exemption नहीं मिलेगी. The condition is कि at least 80% of export proceeds should come to Pakistan through proper banking channel. कि जितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया है उसका at least 80% should be received in Pakistan through proper banking channel. यानी कि पाकिस्तान में फिर फॉरेन एक्सचेंज भी तो आए ना, ये नहीं कि वो पैसे बाहर ही रहे. Then that exemption applies on the export of computer software and IT services. Medical charges. This is the last topic of this chapter. Sometimes many people do some job in some companies, government company or private company. Companies provide medical facility. Sometimes they have some hospitals on their, you can say, panel. And if you have some issue, just go to Hamid Latif Hospital and Fatima Memorial Hospital. They will give you free services because they are on our panel. That is called medical facility. Some companies offer this program. So hold करो. Some companies provide medical facility, like you can go to specific hospitals and you can get a free checkup or free hospital services from there.
Sometimes companies have this option: you go to any hospital, you get your treatment, you get your bills and invoices, and you give it to the department, to the company, and they will reimburse you that amount. Medical expenses reimbursement. एक तो एक facility provide किया है कि you can get any services and you will provide the bills and you will get reimbursement. Medical facility और medical reimbursement तो एक the different thing. बाद sometimes ये होता है कि companies don't allow medical facility, companies don't allow medical reimbursement, they only give you medical allowance in your salary. The fix, let's suppose 25,000 per month is the medical allowance in your salary slip. Whether you are sick or not sick, this is the fixed amount you are getting it. 25,000. तो मेडिकल अलाउंस जो है वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा इफ देयर इज नो फैसिलिटी. ऐसा नहीं कि फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी एंड देयर इज आल्सो गिविंग मेडिकल अलाउंस. If there is no facility, no reimbursement, company is only giving medical allowance in your salary slip. So medical allowance is exempt from tax. So if your salary is, let's suppose 200,000, 2 lakh rupees, 2 lakh में 25,000 is the medical allowance, 175 remaining salary, and 25,000 is the medical allowance you are getting in your salary. So tax would be applied on how much salary? Tax would be applied on not 175, tax would be applied on 180. Why? Because FBI has imposed a restriction कि maximum 10% of the basic salary तक आपको tax exemption मिल सकती है in case of medical allowance. It may be a case कि एक कंपनी कहे कि 1 lakh salary है और 1 lakh medical allowance है, 2 lakh हो गया तो 1 lakh पूरा मेडिकल अलाउंस एफबीआई एग्जाम नहीं करेगा. तो दे हैव क्रिएटेड अ सर्टेन लिमिट अप टू 10%. 10% of the basic salary that can be exempt under the heading of medical allowance. So if your salary is 200,000 and medical allowance is 25,000 rupees, so taxable salary would be 1,80,000. 1,80,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा. 20,000 would be exemption. 20,000 would be exempt from tax. So this is the case of medical allowance. So these are also few of the exemptions that you need to cover regarding income tax exemptions. Okay, thank you.